Hello everyone, I hope that you're all doing good. So today we will study the different kinds of functions. For that, we first study the basic two kinds of functions that are a real valued function and a real function. In a real valued function, जो हमारी range होती है, that is either the set of real numbers or is a subset of the set of real numbers. इसका मतलब वो सभी functions जिनमें हमें output में हमेशा एक real number मिले और a set of real numbers में से कुछ मिले. For example, a natural number, a whole number, an integer or so on. Such kind of functions are called real valued functions. And then there are real functions. Real functions में क्या होता है, जब हमारी डोमेन भी जो हो वो या तो एक रियल नंबर्स का सेट हो या फिर उसका एक सबसेट हो. सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड रियल फंक्शंस. दैट मीन्स जो आप इनपुट कर रहे हो all those values come from either the set of real numbers or one of its subsets. For example, if I define a function from the set of natural numbers to the set of natural numbers and I write that f of x is x plus 1 where x belongs to n. So this kind of a function is a real function. Why? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी domain है that is the set of natural numbers and we know कि जो set of natural numbers है this is a subset of the real numbers and the range here is also the set of natural numbers, which means this is a real function. We now study the different kinds of real functions. The first one being the identity function. An identity function f is defined from the set of real numbers to the set of real numbers and we write f of x is x for all x belonging to R. इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेल्फ. So इसमें क्या होता है, whenever we are entering a number x into the function, जो हमारा output आता है that is itself the number x. That means identity copy हो रही है. So this kind of a function is known as an identity function where all the x's come from the set of real numbers. So इस function में जो हमारा domain set होगा वो होगा set of real numbers और जो range set होगा that will again be the set of real numbers. जब भी हमें किसी पर्टिकुलर सेट को डिनोट करना होता है जो हमारे नंबर थ्योरी में यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स एंड सो ऑन, तो हम जनरली एक और लाइन ऐड कर देते हैं टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम डिफरेंट लेटर्स. सो यू कैन यूज़ दैट, अदरवाइज ऑल्सो इट्स फाइन. एंड देन इस फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x और f(x) की वैल्यूज़ देखूँ, इफ़ आई टेक x द वैल्यू टू बी 0 तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 0. सिमिलरली x अगर 1 है तो f(x) भी 1 है. सो इन दिस वे इफ़ आई टेक डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x एंड इफ़ आई सी व्हाट एम आई गेटिंग इन f(x), सो वी सी दैट अगर हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करें सो द ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस. दिस इज योर x एक्सिस, this is your y-axis and this is your graph of f(x) is equals to x. तो जो इस फंक्शन का ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है. And then comes the constant function. A constant function f is defined from the set of real numbers to the set of real numbers and we write f of x to be c for all x belonging to R. यहाँ पर जो c होता है हमारा वो एक कांस्टेंट होता है. सो इस फंक्शन में क्या होता है कि हम कोई भी वैल्यू एंटर करें हमें हमेशा जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अ फिक्स नंबर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. दैट मीन्स इस फंक्शन की जो डोमेन होगी दैट विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं. बट जो रेंज है इस फंक्शन की, रेंज में हमें हर x के लिए क्या आउटपुट मिल रहा है, ओनली c. सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एक्चुअली singleton c, whereas the codomain is the set of real numbers. अब इस फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का होता है, इस फंक्शन के ग्राफ के लिए सपोज x की वैल्यू अगर मैं 0 ले रही हूँ एंड देयर इज दिस f(x), अगर x की वैल्यू मैं 0 ले रही हूँ तो हमें f(x) मिल रहा है, अगर x की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो f(x) मिल रहा है. सो कंटिन्यूइंग इन दिस वे हम x की वैल्यू कुछ भी ले ले हमेशा f(x) हमारा फिक्स्ड रहेगा. सो सच काइंड ऑफ फंक्शंस व्हेन दे आर प्लॉटेड दे टर्न आउट टू बी ऑफ द फॉर्म दिस.
दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. तो जो ये फंक्शन बनता है, इसकी जो प्लॉटिंग होती है, द ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब ये ऊपर भी हो सकता है इफ सी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है इफ सी इज अ नेगेटिव कांस्टेंट. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी.